इस डायग्राम में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने जो ब्लूटूथ का है वायर का कनेक्शन करिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो सर्किट डायग्राम और पिन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर राइट और लेफ़्ट दोनों हमारे पास जो है इसमें ऑप्शन आते हैं और ब्लूटूथ स्पीकर के। तो यहाँ पे गाइस अगर आप अपने होम थिएटर का जो वायर अगर आप कट करेंगे, जो ऑक्स केबल को कट करेंगे, तो आपको यहाँ पे रेड, ब्लैक और वाइट कलर के वायर मिल लेंगे। तो यहाँ पे जो रेड और ब्लैक कलर के वायर को आप इसमें राइट या लेफ्ट किस में भी आप दोनों को कनेक्शन कर दीजिए, तो आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर वो काम करने लग गया। और अगर आप या फिर आप यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो आपको वायर है उसमें से आप ग्राउंड निकाल के 2 वायर, एक आप लेफ्ट के माइनस में डाल दीजिए और एक आप राइट के माइनस में डाल दीजिए। बाकी जो आपका रेड और वाइट वायर है आपको एक एक सेपरेटली राइट और लेफ्ट के प्लस में दे दीजिए। तो इस तरह से आपका सर्किट अच्छी तरह से काम करेगा। सो आगे की वीडियो में आपको इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। सो स्टार्ट करते हैं।
लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कमेंट और सुझाव तो हमें कमेंट में बताइए।